So today I will be continuing with ohmic and non-ohmic conductors. Okay. So Ohm's law was what? V is equals to IR, but this was followed at a constant temperature. So now I will be explaining you the differences of ohmic and non-ohmic conductor. Ohmic conductors obeys Ohm's law at constant temperature, and this do not obey Ohm's law. In ohmic conductor cases, the graphs V is proportional to I. Okay. So the graph is a straight line because V by I is equals to R and the slope will be R. क्योंकि V by I कितना हो रहा है? R हो रहा है, तो इसका slope R होगा and it is a straight line. But for non-ohmic cases it will be a curve. And slope is constant as I given at all places. Slope will be constant. For at any constant temperature, if we move across at every place, the slope is constant. Here slope is variable. And examples as I given, any kind of metal or electrolyte can be considered in ohmic cases, and LED, transistor, diode, these all things, or else triodes also, they all come under non-ohmic cases. Now I will be explaining you if we have different temperature. If we have different temperature, मान लेते हैं कि T2 is greater than T1 at two different temperatures. Suppose I am plotting now VI curve. This is temperature dependence on resistance. Suppose now I am plotting VI curve. V there, I is here. Two curves will come because we all know V is equals to how much? IR. V is equals to क्या होता है? IR. So V by I is equals to R, and that is constant. We all know this. But ये भी हमें पता है if temperature is more, resistance will be more. मैंने समझाया था कि लास्ट वीडियो में, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, if temperature increases, resistance also increases. अगर T2 greater than T1 है, इसका मतलब क्या होगा? That implies R2 is also greater than R1. तो R2 greater than अगर R1 है, तो किसका स्लोप ज़्यादा है? इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? R2, एंड इसका स्लोप क्या हो जाएगा? R1. तो इस टेम्परेचर को हम लोग T2 मानेंगे और इस टेम्परेचर को T1. बहुत बार दो तीन ग्राफ दे देगा एग्जाम में और पूछेगा which is having higher temperature. तो जो लाइन जो ऊपर आता है that has higher temperature than the other lines. अगर तीन होता है लाइन बीच में और एक, तो क्या हो जाता है? सोचो बीच में I am putting one more line. This is T3. तो इसका एंड ये R3 है, तो समझ में क्या आता है कि T2 is greater than T3 is greater than T1 because इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, देन इसका स्लोप. तो लाइक दिस, अंडरस्टूड? राइट इट. Next comes your specific resistance. Specific resistance, which is represented by rho. We all know this formula, R is equals to rho L by A. Okay, R is equals to what? Rho L by A. And specific resistance is a material property. This is what? A material property. Suppose I will take aluminium. तुम aluminium छोटा पीस लो या बड़ा पीस लो, the resistivity will remain same. Although the resistance can change, it is a material property. Aluminium होना चाहिए, बड़ा aluminium लो या छोटा aluminium, both will have what? Same resistivity. If you take a piece of aluminium in India and you take a piece of aluminium in Australia, again both will have same resistivity. It is a material property. Understood? So how things change and what is its SI unit? Try to understand. SI unit क्या होगा? Resistance का क्या है? SI unit is ohm is equals to rho का हमें नहीं पता, length का I know meter, area is how much? Meter square. So now this meter will come here, तो ohm meter rho. तो SI unit कितना हो जाता है इसका? Ohm meter. SI unit of resistivity is what? Ohm meter. And how it is defined? Now specific resistance, it is said to be the resistance of a wire. It is said to be the resistance of the wire of unit length and unit area of cross section. Unit area of what? Cross section. समझ में आ रहा है? जब लेंथ को 1 ले लेंगे और एरिया को भी 1, बोला है ना, यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. लेंथ भी 1 हो गया एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया भी 1 हो गया, तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रो इंटू 1 बाई 1. तो R इक्वल्स टू क्या हो गया? रो. तो हम लोग क्या मान सकते हैं? रेजिस्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी. इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. देखो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन.
जब भी लेंथ और एरिया 1 1 हो जाएगा उस टाइम पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर व्हाट इक्वल. अंडरस्टूड? राइट इट डाउन. एंड इसमें और भी दो चीजें हैं, फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, राइट इट डाउन देन आई विल एक्सप्लेन.